बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम नंबर थ्योरी से चैप्टर 2 में एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन 4 हल कर रहे हैं। प्रूव दैट a plus b divides a power n plus b power n where a b are integers. The integer a is not equal to minus b because if a plus b is not equal to 0, then a plus b may divide a power n plus b power n. Here this n is a positive odd integer. The integers are plus minus 1, plus minus 3, plus these are all positive and negative integers. And here in the question, this n is a positive odd integer. So the positive integers are 1, 3, 5, 7. To prove by mathematical induction, we have to prove this statement for n is equal to 1. Then we suppose that this statement is true for n is equal to k. Since k is odd integer, so the next odd integer will be n is equal to k plus 2. Hence, in the last step, we will try to prove that this statement is also true for n is equal to k plus 2. In case, if this statement is true for n is equal to 1, where 1 is odd integer, n is equal to k, where k is odd integer, and finally, if it is true for n equal to k plus 2, where k plus 2 is also odd integer, then we will say that by the principle of mathematical induction, this statement is true for all positive integers, that is a plus b will divide this expression. इसके अलावा हमने टू मेथड से इस क्वेश्चन को हल किया है। यहाँ जो स्क्रीन पे जो फर्स्ट मेथड है वो इसी मेथड से है, n इज इक्वल टू 1 से, n इज इक्वल टू k से, n इज इक्वल टू k प्लस 2 से। सेकंड मेथड जो है वो हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू 1 से और n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 से। 2k प्लस 1 आड है, तो नेक्स्ट आड हमारे पास होगा n इज इक्वल टू 2k प्लस 3। तो सेकंड मेथड होगा n इज इक्वल टू 1, n is equal to 2k plus 1, n is equal to 2k plus 3. So let's see the first method. We have the statement. This is our statement. Here n is odd, positive integer. By mathematical induction, we have for n is equal to k. Sorry, this is not k, this is 1. This is not k, but this is 1. So here we have mentioned that we have to prove the statement for n is equal to 1. So the first step is n is equal to 1. Putting n is equal to 1 in this statement, so we get a power 1 plus b power equal to a plus b. Obviously, a plus b divides a plus b, which is true because every integer divides itself for all integers. Therefore, here we see that a plus b divides a plus b. It means that a plus b divides a power n plus b power n for n is equal to 1. Hence, this statement is true for n is equal to 1. Statement 1 is true for n is equal to 1. Suppose 1. This is our statement 1. Suppose 1 is true for n is equal to k. In this step, we simply replace this n by k. So, a plus b divides a power k plus b power k, where k is odd positive integer. Since a plus b divide this expression, this integer, hence this integer can be written as a multiple of some integer, that is a power k plus b power k will be equal to a plus b into m, where m is some positive integer. We have to remember this is our supposition. We can also take this supposition equal to this one, and this will be helpful to prove the last step of the problem. Now for n is equal to k plus 2, which is odd positive integer. Now this is the n is equal to k plus 2. K plus 2 is odd positive integer. This is the last step in the principle of mathematical induction. So this is our a power n plus b power n. This is for n. A power n becomes a power k plus 2. Here b power n becomes b power k plus 2. Now we simplify. This can be written as a power k a square. This can be written as b power k b square. Now adding and subtracting these two terms. a पावर k के साथ हम b पावर k लाएंगे और a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसी टर्म के साथ, इसी के साथ हम a स्क्वायर
यूज करेंगे ताकि ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें और हमारे पास ए पावर के प्लस बी पावर के आ जाए। तो चूंकि यहाँ इसको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया तो इसको हम यहाँ पे माइनस बी करेंगे और ये वाला जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज है। अब इन दोनों से हम ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, इन दोनों से हम बी पावर के कॉमन निकालते हैं। अब ये क्या है, ए पावर के प्लस बी पावर के, ये यहाँ पे है, दिस इज आवर सपोजिशन। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और ए स्क्वायर अपनी जगह पे आ चुका है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। अब here we see that a plus b is common, so this is the common factor. Now since this expression is equal to a plus b times this expression, or this side is represent an integer, a plus b is an integer, this expression gives integer for all value of a, b, m and k. Hence this a plus b divides a power k plus 2 plus b power k plus 2. This is our a power k plus 2 b power k plus 2. So and this expression is integer, that is a plus b divides a power n plus b power n for n is equal to k plus 2. Also by principle of mathematical induction, the statement this one is true for all positive odd integer n. तो फर्स्ट मेथड में हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट प्रूव किया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने स्टेटमेंट प्रूव किया, k हमारे पास 8 था। फिर लास्ट स्टेप में हमने n इज इक्वल टू k प्लस 2 के लिए प्रूव किया, k प्लस 2 भी 8 है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन इसको हम आज इसका मेथड हम चेंज करते हैं। दीज आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम यूज करते हैं तो हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे, हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे, फिर हम n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 लेंगे। फर्स्ट मेथड में हमने n इज इक्वल टू k लिया था और यहाँ पर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे, फिर इस k की जगह हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो 2k प्लस 3 आएगा। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम n इज इक्वल टू 2k प्लस 3 यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड में मैथमेटिकल इंडक्शन में n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 ये 8 है, इसी 8 के नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 8 जो है वो 2k प्लस 3 है। तो इन तीनों 8 को हम मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज करेंगे और हम कह सकेंगे कि दिस इंटीजर विल डिवाइड दिस इंटीजर फॉर n where n is positive odd integer. So let's start our method. By mathematical induction we have to prove r is equal to 1. So if we put n is equal to 1, then a plus b will divide a plus b, which is true. Suppose the statement is true for n is equal to 2k plus 1. This 2k plus 1 is odd, so replace this n by 2k plus 1. This is our supposition. We are to show that the statement is true for n is equal to twice k plus 1 plus 1, this is 2k plus 3. अब हमने इसी लास्ट स्टेप को प्रूव करना है। We have to prove that the given statement is true for n is equal to 2k plus 3. तो n की जगह हम 2k plus 3 यहाँ पे पुट करेंगे और इसी एक्सप्रेशन को हम लेंगे। Here we have substituted n is equal to 2k plus 3. अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसी टर्म को ऐड करेंगे और इसी टर्म को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम एज इट इज रखने देंगे, क्योंकि यहाँ पे a पावर 2k प्लस 1 है तो इजाफी टर्म हम b पावर 2k प्लस 1 लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो इजाफी टर्म के साथ हम a स्क्वायर लगाएंगे ताकि a स्क्वायर हम कॉमन निकाल सके और इसी टर्म को हम यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से हम कॉमन निकालते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में a स्क्वायर कॉमन है, ये रिमेनिंग है, और सेकंड टर्म में b पावर 2k प्लस 1 कॉमन है तो ये आ गया। अब अगर हम देखें बाई 1 हमारे पास क्या है, दिस इज आवर सपोजिशन। तो सपोजिशन में ये है दिस इज डिविजिबल बाई a प्लस b,
ये वाला सपोजिशन में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है दिस a प्लस बी डिवाइड दिस वन, तो क्या है a प्लस बी डिवाइड दिस वन बाई सपोजिशन, सो आल्सो a प्लस बी डिवाइड a स्क्वायर इंटू दिस वन, क्योंकि अगर a b को डिवाइड करता है तो a b c को भी डिवाइड करता है। तो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है वो डिविजिबल है। अब यह जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, आल्सो a प्लस बी डिवाइड्स b पावर 2k प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में a प्लस बी है, तो चूंकि a प्लस बी डिवाइड्स a प्लस बी, हैंस a प्लस बी विल डिवाइड the product of a plus b with any other integer, that is a plus b will divide this second term of this expression। यहाँ पे दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में हमने सपोजिशन यूज किया और सेकंड टर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से ये वाला डिविजिबल है बाई a प्लस बी, तो ये दोनों टर्म डिविजिबल है। हैंस दिस टर्म इज इक्वल टू a पावर 2k प्लस 3, b पावर 2k प्लस 3, वी कैन से दैट a प्लस बी divides a power 2k plus 3 plus b power 2k plus 3. The statement is true for n is equal to 2k plus 3. मैथमेटिकल इंडक्शन में थ्री स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे किया हुआ है, सेकंड स्टेप अभी हमने यहाँ तक तो किया। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेकंड स्टेप। नाउ वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट फॉर n is equal to 2k plus 3। यहाँ पे टू टर्म्स है, दोनों डिविजिबल है। Hence, by mathematical induction, it is true for all odd positive integer। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे है हमारे पास, ये लास्ट स्टेप है a प्लस बी डिवाइड दिस वन फॉर ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे टू मेथड्स हमने यूज किए और हमारे पास इसी प्रॉब्लम में n क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर था। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, n इक्वल 1 हमने लिया फर्स्ट मेथड में। फिर हमने सपोज वाला स्टेप किया, n इक्वल k किया। फिर हमने n इक्वल k प्लस 2 से प्रॉब्लम को साबित किया। इन तीनों को हमने यूज किया फर्स्ट मेथड में। दिस वन इज ऑड, दिस k इज ऑड, दिस k प्लस 2 इज ऑड। सेकंड मेथड में फिर हमने n इक्वल 1 के लिए क्वेश्चन को प्रूव किया। फिर n इक्वल 2k प्लस 1 के लिए हमने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सपोज किया कि ये ट्रू है, 2k प्लस 1 ऑड है। इसी आर्ट के नेक्स्ट जो दूसरा आर्ट है वो 2k प्लस 3 है। तो ये तीनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। इन तीनों को हमने ट्राई किया और हमें मालूम हुआ कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने कहा कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है, दिस a प्लस बी डिवाइड दिस वन फॉर ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हमने दो मेथड किए, फर्स्ट मेथड में यही इस्तेमाल किया, सेकंड मेथड में यही। अब अगर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वहाँ पे हमारे पास n इवन होगा और ये क्या है, दीज आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर है और इवन है, तो हम n इक्वल टू 2, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम n इक्वल टू 2 लेंगे और यहाँ पे हमने n इक्वल 1 लिया था। यहाँ पे हमने सपोज n इक्वल k किया था, यहाँ पे हम सपोज करेंगे n इक्वल k और 2 इवन है, k भी इवन है और k प्लस 2 भी इवन है। तो इन तीनों के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करेंगे और सेकंड मेथड में हम n इक्वल टू 2 लेंगे, n इक्वल टू 2k लेंगे और n इक्वल टू 2k प्लस 2 लेंगे। तो सेकंड मेथड भी हम करेंगे इसी से। जिस तरह यहाँ पे हमने दो मेथड किए, दिस वाज फर्स्ट मेथड, hence this will be for first method, this is for second method, hence this will be for second method। तो सेकंड मेथड में क्या है, n इक्वल 1, तो यहाँ पे n इक्वल 2, यहाँ पे n इक्वल 2k प्लस 1, यहाँ पे n इक्वल 2, यहाँ पे n इक्वल 2k प्लस 3, यहाँ पे n इक्वल 2k प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट, इसी स्लाइड को याद रखें कि हमने ये जो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम ये मेथड जो यूज करेंगे, 4 मेथड्स हो गए। 8 के लिए ये 2 मेथड है, इवन के लिए 2 मेथड, तो इसको आप और से सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।